Hello everyone, how are you all? Let us know if audio, video, everything is fine. Yes, so I think everything is fine. So just let us know in the comments if everything is fine, and then we will start. Okay, if audio, video, everything is fine. So you can hear us, right? So in the chat section, okay. So fine. So okay. So we have got comments like fine. Okay, great. So how are you all doing? Yes. So Tamil Selvan is also here. He is our course enrolled student, by the way, and he has been doing very good in almost, I think, all the AIMTs. I don't remember today's rank. I have not seen his rank. I mean, I have not seen result today, but I remember he was in top ranks in previous two AIMTs. So hi Tamil Selvan. Okay, so Munna Bhaiya is one of the username. I forgot his actual name, but yes, he is also doing very good in AIMTs. Okay, so someone is saying that we can't hear Deepak sir. Okay, okay. So just a second. Sorry. I think now it will be fine. So please let us know. Yes. Audio, video, volume, echo, everything. Is everything fine? Let us know. So now, Deepak, can you speak a little bit more so that they get to know? So hi everyone, welcome to Go Classes. I wanted to ask you, how was your experience with Go Classes Gate DA All India mock test so far? So far we have conducted 3 AIMTs for Gate DA, and let us know your experience with each of them. Let me tell you that each of them has a different level, because see, we don't know which level the Gate 2025 paper will be. Okay, so we want you to practice each kind of paper: easy, moderate, hard, tricky, conceptual. Okay, all the categories that are there, we want you to we want you to be ready for the Gate DA 2025 exam. So Yes. please let us know your experience. It will motivate us. So, by the way, let me ask you one thing. That how many of you were able to solve that Master's theorem question? So there was one question related to, I mean, that could be solved in using Master's theorem. How many of you did it correctly? Okay, because that was one of the trickiest and one of the nice question that I personally liked. So that is why I'm asking. Is there anyone who has done silly mistake in that particular question? Because that question was actually very nice. So that is why I'm asking. Yes, the paper was actually very much balanced. There was, I think, two, three very, conceptual questions in machine learning. Those were 2 mark questions. So, what was your overall experience? And yeah, Ritansh is saying ultimate real feeling of gate exam. Thank you, Ritansh, for your feedback. yes. Yes, Sachin. Yes, right. So actually, yes, got it wrong. Now, people are saying that the particular Master's theorem question they got it wrong. Actually, that question was just to convey that we should be very careful whenever we are dealing with big O, theta, and these things, right? Because that particular big O notation was very tricky one in that question. So I really like that question, and I just wanted to put it in one of the AIMTs. So that is why I have put it. So even actually I got to know even top rankers who has got top rank in 10 in I mean under 10. Those people also got that question wrong because that question was very easy. The first good thing about that question that it was very easy, but you just have to notice that it was a big O notation, and it was one of the unusual question, but gate can definitely test you that kind of understanding. So that is the reason I have put that question. Okay, so we have conducted 3 AMTs so far, and
all the AIMTs were of different level. In one of the AIMT, we have kept basically 2 mark question and 1 mark question with almost equal difficulty. So today we have kept 2 mark question with little bit more, and few 2 3 2 mark questions were actually very nice. Especially that particular SBM question, if you have solved the in that question we were asking the value of alpha, W and B, right? So that particular question was very nice, and that basically ask you to revise SVM concepts. In case if you have not solved it correctly, then please revise SVM concept, and then you will be able to solve that particular question. Rishabh is saying it has been good. I have been attempting it every week. Every All India mock test Rishabh has attempted. My Right. revision of ML is pending and need to finish AI course. Got 58 in first All India mock test, 61 in second, 65 in third. Rishabh, that is excellent performance, let me tell you. And once you revise your ML course, okay, just go through your ML notes, lectures, basically just revise machine learning, and then as you are saying that you need to finish AI course also, there are almost 30 days, so definitely you can revise ML also, you can finish AI also, and you can be, I can say, ready for ready to top the gate exam in the gate 2025 on 15th February. You can top the gate exam, just keep it up. Okay, so you are doing very well. Just like all the weak areas that you are already suggesting, you already know what are your weak areas. That is a very good thing. So just work upon them. Definitely you will top the gate exam, and you have my best Mm, wishes. right. So Tamil is saying that, by the way, Tamil Selvan, as I just mentioned, he is one of our course enrolled student and who is doing very good in our AIMTs and other mock tests also. And he is saying that, sir, one honest feedback that Go ecosystem is best for test series. Thank you so much, Tamil. So we have conducted 3 AIMTs so far, and all of those AIMT we have designed questions very carefully. We have kept question paper very much balanced. There was not too hard, not too easy. I mean, depending on the AIMT, the difficulty level was varying. Okay, but overall, we want to give you a different experience with the different AIMTs. Uh, so overall, like, what was your experience? You can definitely share here, or once this live streaming end, then after that, please let us know that what was your experience. Now, you most of you have attempted 3 IMTs. Now, just let us know. Since see, 1 month is remaining, and we really want to do. Okay, so so basically, we actually want it to happen, but it all depends on you. If you guys want, then we will definitely be having AMT 4 and 5. It just depends on that how much you guys want it, because see, for every AMT we actually spend 3 to 4 days. Now if you are finding it worthy, then we will definitely do it. Okay, because we have enough time. It is almost 1 month, and if we have 2 more AMTs in this 1 month, then definitely your preparation will be at boost, right? uh, so now just let us know that do you want next to AMTs. So after this streaming ends, please share your feedback of all the three All India mock tests that we have conducted for GATE DA students, and also please let us know, do you want more All India mock test? Let us also know on which dates, because almost 1 month is there before the GATE DA 2025 exam. So let us know on which dates you would like the next upcoming All India mock test. Okay, so please motivate us. We also try to motivate you by our post on the community post, whether our lectures, okay, our basically our test series. We also try to motivate you, and we would like you to motivate us by sharing your feedback. Actually, your feedback matters a lot. We go through each and every comment, each and every feedback. It tells us how what are the good things about our test series, our AIMTs, our mock test. Okay, where we can improve. So we always consider all the feedback, all the suggestions. So if you have any suggestion, you can let us know in the comments. If you have any feedback, let us know in the comments. It will We will definitely go through each and every comment, each and every feedback. Okay, So one of so the student is saying, Saad Sek is saying that do not keep AMT 4 and 5 in case we are keeping it. I mean, in case we are conducting it, do not keep it around the CS paper. It is really very nice suggestion.
So we really like this suggestion that we should not be keeping AIMT 4 and 5 around CS paper, which means around 1st of February. I mean, I think 1st of February, Saturday or Sunday. So we should not keep it on 2nd, or maybe just before 1st. That is really a nice suggestion, because many of CS aspirants really want to appear in Gate DA AIMT, and if we keep it around CS, then they might miss it, because they don't want to have FOMO at the last moment. So yes, that is really a nice suggestion. So see, now suggestions come from you guys. So what you need to do, you just need to suggest us that okay, we need to have, even if you want, we can even have 6 AMTs. Okay, you just need to suggest us that what are the dates. Okay, if you are suggesting that we should be having AMT 4 and 5, then please let us also know dates, so that we can get to know your feedback, that what you people actually want. Okay, so just let us also know dates. Let us know that you want AMT 4 or 5, no, or you don't want it. Okay, if in case if you want it, just let us know what are the dates that you prefer. For example, Okay, one actually, of Sachin, let me tell you one more thing, and all the students also. Actually, in the Gate DA, because in the Gate DA, good quality questions, there is a shortage of good quality questions. So actually, I also want that we should have 6 AMTs. right, That is I also want that in Gate DA, if we have 6 All India mock tests, then a lot of quality practice questions students will be solving, because in our All India mock test, in our test series, in our lectures, we solve a lot of standard questions. Okay, all the Gate DA students who have enrolled in our Gate DA complete course, you have seen in every lecture bulk of, I can say, a lot of practice questions, standard questions from the top universities, from the standard resources. A lot of practice questions we have done to prepare you in the best way for the Gate 2025 D exam. And I also want, because one day I and Sachin, we were talking about it, that if there are 6 All India mock tests, then definitely it will be beneficial for all the Gate DA students, whether they are Go classes enrolled or whether they are not Go classes enrolled. Okay, for all the Gate DA aspirants, basically all over the India, it will be very beneficial. So please let us know your suggestions, your feedback. It really matters. Okay, please do not hesitate, or please do not, I can say, prevent yourself from making a comment. Okay, please don't do that. Please, right, please share your feedback, because for us, your feedback is not a formality. It's not like you will make a comment and that's just a formality, we will not read it. Okay, it does not happen. Whatever feedback you share, we go through it. I and Sachin, we both go through your comments. Sometimes we share the comments with each other, that okay, in this comment this student is suggesting something. Okay, let's see if it will be helpful for the students, or not. Okay, so all the feedbacks, all the suggestions we consider, and we try to improve continuously. Okay, for the last 3 or 4 years, okay, ever since we started Go classes, we are basically considering the students feedback and suggestions. Okay, and we are improving daily. Every day we are improving. Okay, we are and we want to keep improving. It will never happen that we will just stop improving and we will say okay, that this is perfect. No. Okay, basically we want your suggestions to keep, I can say, we want to consider your suggestions and keep improving our course to make it better with the time. right. Okay, so please let us know your feedback. So one of the comment that I really liked in the live session, Anshul is saying कि sir, test was great, and the quality and variety both were there. So actually this is very much true. For example, in this particular test, for machine learning, I'm telling you, I tried to put the questions, type of questions which I have not put in AIMT 2 or AIMT 1. If you have noticed, like for example, I have not put questions like knife base, right? Knife base question where the toy data set was given, the small data set was given. Those kind of questions I have not put in AIMT 1 and AIMT 2. SVM, finding W and B, those kind of questions, right? And there are many questions. Those kind of questions were not in AIMT 1 and AIMT 2. Similarly, in AIMT 2, there were questions which were the type or the topics they were covering. Those are not in AIMT 1 or 3. Similarly, if we are conducting AIMT 4, in that case, I will be, for machine learning, I'm telling you, I will be putting the questions related to like precision recall. So I already have things in my mind that okay, these are the things in machine learning I have not put in 3 AIMTs, so I will be putting in 4 AIMT. Like regarding precision recall, right? I have not put this kind of question in 3 AIMTs, because I can only put 15 questions, for example, in one test, right? So I cannot put like 30 questions in one test for machine learning. So that is the reason
like we will be putting, variety of question and not just machine learning, everything. So I think this time AI and DBMS was also trickier, right? So Deepak has put DBMS questions, and that model question, Deepak, I think most of the people were not able to solve it. I'm not sure because they have not seen our lectures if they are not Go classes enrolled. But yeah, for Go classes enrolled student, that model question was really, cakewalk if they have watched our lectures. Actually, Sachin, that model question was in the sample paper last year. So that is Okay. the reason. That is the reason to put it in our All India mock test, because I just want to make sure that there should be, if we know that okay, there is a possibility of this question being asked in the GATE 2025 exam, then students should be, I can say, prepared for it. Okay, whether they see one thing, all the students, I want to tell you that अगर आप मिस्टेक भी कर रहे हो, आप टेस्ट के अंदर आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, आपने अगर उसको गलत भी कर दिया तो भी उसमें कोई कोई दुख वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आपने गलत किया, वो मॉडल वाला क्वेश्चन अगर आपने अभी गलत किया, आपने सॉल्यूशन देखा, मॉडल आपने सीख लिया, 10-15 मिनट का वीडियो है, ठीक है, जब आप उसका सॉल्यूशन देखोगे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मॉडल ये होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक में। उसके बाद अगर वो गेट 2025 में अगर वो क्वेश्चन आता है, देन यू रेडी। ओके, तब आप गेट 2025 के बाद में बाहर आके आप बोलोगे कि क्योंकि ये क्वेश्चन गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज में था तो इसलिए मेरा अभी सही हो गया। तो अगर Definitely. आपका कोई क्वेश्चन मॉक टेस्ट में अगर गलत हो रहा है तो उसमें इतना दुख मनाने वाली बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि अच्छा यार बहुत सारी सिली मिस्टेक हो रही है, मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो डिमोटिवेट होकर वो टेस्ट देना बंद कर देते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि अगर अभी गलती हो रही है, सारे 65 क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, and then you will see many of these questions you will see in the GATE 2025 exam. Okay, and after the exam, I'm very sure that you will put a comment that this question was there in the Go classes test series, in the Go classes all India mock test, so I was able to do it in GATE 2025 exam. Okay, so this we have seen in the last 2-3 years. Okay, this we have already seen after every gate, after gate 2024, gate 2023, after gate 2022, students have commented on the Go classes YouTube channel. Okay, they have put a lot of comments that this question was in the all India mock test, this question was there in the mock test in the test series of Go classes, so I was able to correct it. Okay, so yeah, that is one thing. One more Right. thing I want to tell you, if you want 6 all India mock test, if you want AIMT 6 also, then please make sure that almost 1,000 students they attempt GATE DA AIMT 4 and 5. Okay, see, so far already we are getting a lot of students, a lot of GATE DA students are attempting Go classes AIMTs. Okay, almost 600-700 students. If you see, if you basically see total number of GATE DA students who appear in the GATE DA exam, then if you compare that number with Go classes AIMTs students, okay, so almost 700 students are attempting our mock test, our AIMTs, and that is a big number. I can tell you one thing, you can be sure कि टॉप 500 में जो टॉपर आने वाले हैं उनमें से मेजोरिटी, उनमें से आई कैन से ओके टॉप 500 में से कम भी 300 स्टूडेंट्स ने हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट या 250 स्टूडेंट ने हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट या मॉक टेस्ट दे दिया होगा। तो जो तो ये जो आपको बेसिकली कंपटीशन जो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी गेट एग्जाम नहीं है, गेट एग्जाम में तो सिर्फ एक मैच है, ठीक है, वहां पे तो सिर्फ एक ही मौका है, लेकिन यहाँ पे आपके पास बैक टू बैक मौका है। ओके, एक 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 टेस्ट बिगड़ गया तो अगले में इंप्रूवमेंट करके अगले में कुछ कर सकते हो, अगर वो भी बिगड़ गया तो फिर से इंप्रूवमेंट करके अगले में कुछ कर सकते हो। तो आपको जो अभी जो कंपटीशन गो क्लासेस के मॉक टेस्ट या एएमटी के अंदर मिल रहा है, दैट इज द कंपटीशन यू विल बी फेसिंग इन गेट 2025 एग्जाम। तो गेट 2025 से पहले ही उस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर लो। ओके, अगर आपको पता है कि यार फाइनल मैच, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होना है, तो अच्छी चीज है ना कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ही 5 मैच या 10 मैच की सीरीज कर लो। तो ये Right. जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हैं जितने भी, ये बेसिकली दीज आर योर प्रैक्टिस फॉर गेट 2025 एग्जाम। एंड इफ यू वांट 6 all India mock test, then please please share this video, please share the word of Go classes gate DA AIMTs with all the gate DA aspirants. Okay, please do that, please share, so that 1,000 students can attempt the next AIMT 4 and 5. Right. And again, in those AMT, the upcoming AMTs, the questions variety, see, difficulty level might vary, but variety will also vary. For example, one of the student has suggested that, sir, please keep more questions from hypothesis testing, more questions from data warehousing, more questions from Gibbs sampling in artificial intelligence, more questions from rejection sampling. So we will be putting those kind of questions AMT 4, 5. And if you people want, just let us know in the comments. We will be even having 6 AMTs.
So because 3 weekends are there and we can have one AIMT each weekend, right? So we can have even three more AIMTs if you people want. So let us just promise one thing, that in next three AIMTs you will see a. I mean, okay. So I'm not promising that we will be having three AIMTs. It all depends on you. Okay, we are not saying currently, but it all depends on you. But what सचिन I'm करना saying. है यार, करना है, रिक्वेस्ट है मेरी। मैं स्टूडेंट्स की तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टूडेंट्स की तरफ हूँ। लेकिन थोड़ा मेरा साथ दो, जितने भी स्टूडेंट्स Right. ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा साथ दो, ठीक है, करना है। Yes. मैं So we आपकी will तरफ से do. मैं भी एक कमेंट कर दूंगा, ठीक है, मैं भी एक यस सचिन। So we will be keeping variety very different, because see, like we are just making sure that you get to learn concept. Whenever we are designing AIMT, we always make sure one thing, that you get to learn concept such that your concept should be applicable in exam. For example, this time if we have put questions from, let's suppose, like topics like SBM, knife based perceptron, something like that, right? Then we will be putting different kind of questions, either completely from different topics, or if we are putting from the same topic, then completely different kind of questions. So we want to make sure, see, our aim is only one. We want to make sure one thing, that whenever you are appearing for GATE DA 2025, in that case, if you have attempted our all 6 AIMTs, in that case you should be able to answer almost all of the questions, because we will be covering all the varieties which are possible. If you are not able to answer, let's suppose, some question, then most probably that question might not be able to answer for most of the students. So that question might not be worry for your rank. See, your rank will be determined by the questions, or will be determined by the concepts that you know. If you don't know something, that is okay. You don't have to get 100 out of 100 to get AIR under 100. To get AIR under 100, or even AIR 1, you don't need 100 out of 100. Okay. So what I'm saying is that we will be keeping different varieties and different difficulty level, so that your all the concepts will be revised. You might have noticed it, and one of the suggestion has already been there, that please put questions from hypothesis testing. We will be definitely putting more questions from hypothesis testing. This time we have put one question. Okay, I'm not revealing, but maybe next time we can put two questions from hypothesis testing, but we will not make it imbalance, because hypothesis testing two questions itself, is a big deal, because it is a small topic, and they might not ask more than two questions. So we can put one or two questions, but not more than that. So we will be obviously keeping it balanced. We cannot make it skewed. हाँ, वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग, दीपक इस बार वो इंसर्शन शॉट का एक क्वेश्चन दिया था, वो सिंबल वाला क्वेश्चन नहीं था, इस हाँ टाइप हाँ, का एक एक अदर क्वेश्चन, दैट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन. आई मीन, वी हैव एक्चुअली पुट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन गेट CSE AIMT also, but a different question with the symbols. That kind of question I have put in this AIMT for insertion shot. That was really a good question. So one of the student is एक्चुअली saying, हाँ. एक्चुअली एक चीज सारे स्टूडेंट्स को मैं बताऊं, जब हम मॉक टेस्ट बनाते हैं, एआईएमटी या टेस्ट सीरीज का कोई भी टेस्ट बनाते हैं, पर्टिकुलरली मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या है कि उसमें बेसिकली आपको गेट के एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलता है सीधा। तो जब हम मॉक टेस्ट बनाते हैं तो हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दें जो अभी तक आप जब गेट डीए के पीवाईक्यू करोगे या गेट सीएससी के भी पीवाईक्यू करोगे, आपके कॉमन जो सब्जेक्ट हैं गेट सीएससी के साथ, उसके अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो अभी तक आप पीवाईक्यू के अंदर तो ऑलरेडी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। तो आप कुछ नए क्वेश्चन सोल्व करो, कुछ नया वेरिएशन, कुछ नई आपको, क्योंकि हो सकता है कि गेट 2025 के अंदर वो नए क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि रेप्लिका बनती रहेगी। गेट एग्जाम के अंदर हर साल नए क्वेश्चन आते हैं। मुश्किल से कोई 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन की बेसिकली रेप्लिका जैसे होते हैं, लेकिन बाकी जितने भी 55 क्वेश्चन होते हैं वो सारे नए क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो इंसर्शन सॉर्ट वाला जो क्वेश्चन था, ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, और उस स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के बेसिकली मल्टीपल क्वेश्चंस थे, और हमें बहुत अच्छा लगा कि यार इस तरह का क्वेश्चन आज तक कभी गेट एग्जाम के अंदर, कभी गेट सीएस में, गेट डीए में कभी नहीं पूछा गया। तो सचिन ने बेसिकली वो क्वेश्चन वो रखा, ताकि एक क्वेश्चन अगर आपने उस एक क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, उसके बाद अगर गेट 2025 के अंदर अगर उसका थोड़ा वेरिएशन आता है, इंसर्शन सॉर्ट की बजाय सचिन अगर मान लो क्विक सॉर्ट आ गया या मर्ज Definitely. सॉर्ट आ गया, कुछ भी आ गया, तो क्योंकि आपने एक उसका एक तरीके से उस फ्लेवर का एक क्वेश्चन सोल्व कर रखा है, तो आपके लिए गेट एग्जाम के अंदर जो जो भी नया वेरिएशन आएगा वो आपके लिए हार्ड नहीं होगा, क्योंकि आपने वो फ्लेवर एक बार एक्सपीरियंस कर रखा है। तो वो हमारा पर्पस है कि आप
इस तरह का एक्सपीरियंस भी आपको मिले, और आपको अगर आपको गेट 2025 एग्जाम का अगर एक रियल एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको एआईएमटी के अंदर कुछ नए क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस करने चाहिए, राइट? क्योंकि गेट के अंदर तो नए क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ओके। One of the student is saying, I love sorting algorithms just because Go classes questions. Yes, actually we have put a different variety of sorting algorithms. Actually, those sorting algorithms were not having numbers. In one of the questions, they were having images like symbols. In one of the question, do you remember that in AMT 2 or AMT 1? I don't exactly remember. It was in 1 or 2. There were bar. There were different sticks. Okay, that small stick, big stick. There were different sticks. Do you remember? There was one, I think, merge sort related question. Okay, so we will be putting those kind of questions so that you're at least one topic like sorting algorithm in algorithm. So it will be too much conceptually revised that whenever they ask any kind of trickier question sorting, then you are 100% sure that you can solve that kind of question, right? So we will be definitely putting those questions in next 3 IMTs also. Okay, just be ready. Okay. One DBMS question actually let me discuss. A student is also saying कि DBMS के जो questions हैं उनमें थोड़ा सा शॉक लगा, लेकिन there is a lot to Lot to learn. learn. निक ने लिखा है कि DBMS में थोड़ा शॉक लगा, but there is a lot to learn. तो एक्चुअली एक क्वेश्चन मैं बस डिस्कस करना चाहता हूँ। जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3 था आपका गेट डीए का, उसके अंदर एक क्वेश्चन डाला था जिसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी दी थी। सचिन, डेटाबेस के अंदर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो दी थी। Okay. और अब डेटाबेस में तो बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उनके बीच में बहुत सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने पूछा वो सारे एट्रीब्यूट्स के लिए नहीं पूछा। सिर्फ मतलब उनमें से सिर्फ 4 एट्रीब्यूट के लिए क्वेश्चन पूछा कि अगर एक टेबल है जिसमें सिर्फ 4 एट्रीब्यूट हैं, डेटाबेस में बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, लेकिन मेरी जो टेबल, जिस टेबल के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसमें सिर्फ 4 एट्रीब्यूट हैं। अब इसको बताओ कि ये किस नॉर्मल फॉर्म में है। और इस तरह का क्वेश्चन गेट सीएस के अंदर 2 बार आया है। गेट सीएस में Wow. इस तरह का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है ऑलरेडी। तो एक्चुअली जो गेट सीएस के अंदर 2 क्वेश्चन जो सचिन आए हैं, हाँ. उन्होंने ट्राई तो ऐसा ही किया कि डेटाबेस की फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी और उसके बाद एक सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट के लिए पूछ लिया कि ये किस नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन वो दोनों क्वेश्चन के अंदर बेसिकली प्रोफेसर ने कोशिश तो करी है, लेकिन है ना, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बना पाए। वो ठीक है, ट्रिकी नहीं मतलब बना, अगर उन्होंने जानबूझ गलत के हो तरीके सकता से, है कि नहीं बनाया हो ट्रिकी हाँ, क्वेश्चन. गलत मेथड से भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ओ. वो जो 2 क्वेश्चन गेट सीएस के अंदर आए हुए हैं, उनको अगर आप देखोगे गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट पे जाके, अगर आप कमेंट में देखोगे, डिस्कशन देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि गलत मेथड से, रॉन्ग मेथड लगा के लोग आंसर ला रहे हैं, और वो आंसर सही भी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि एक ऐसा वेरिएशन बना दूं जिसमें अगर आपने गलत मेथड लगाया तो आपका आंसर गलत ही आएगा। तो इस बार का जो AIMT 3 था उसके अंदर इस तरह का एक क्वेश्चन रखा, और कितने लोगों का वो क्वेश्चन सही हुआ है। सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट के लिए नॉर्मल फॉर्म पूछी है, तो पहले आपको उस सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको पता होगा, प्रोजेक्शन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वो यहाँ पे काम आएगा। और उसके बाद में आपको नॉर्मल फॉर्म उसकी बतानी है। कितने लोगों का वो क्वेश्चन सही हुआ था या गलत हुआ था, लेट मी नो। और अगर एक्चुअली आपने हाँ. गलत कर भी दिया तो एक चीज की गारंटी है कि अब नेक्स्ट ईयर जब गेट 2025 के अंदर जब वो क्वेश्चन आएगा या उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। एक्चुअली दीपक, मुझे लाइक आई डू नॉट रिमेंबर डीबीएमएस कंसेप्ट ऑन टॉप ऑफ माई हेड, बट सुन के अच्छा लग रहा है कि मतलब प्रोजेक्शन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज लेना है और वो सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट के लिए, मतलब सुन वो के ही अच्छा वो लग रहा है. वो जब मैंने गेट के अंदर देखे, गेट सीएस में वो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं काफी खुश था कि यार इस तरह का क्वेश्चन भी प्रोफेसर ने पूछे हैं। लेकिन फिर मैं जब देख रहा हूँ कि यार लोग सारे कमेंट के अंदर, डिस्कशन के अंदर हर कोई गलत कॉन्सेप्ट लगा रहा है और सही आंसर आ रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये इसका हाँ. कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। राइट. ऑसम. ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड आई थिंक एनीथिंग Yes. एल्स। Yes. So thank you everyone. Just let us know in comments that how many AIMTs you want. Okay. And see, just let us know 3 things. What was your experience till this date, or what was your experience so far with AIMTs? And if you want, then how many AIMTs you want. Okay, this is second thing. So your experience, how many AIMTs you want, and what are the dates. Okay, any of this. Okay, you do not need to comment for all of these 3 questions. Just any of this. How was your experience, or maybe how many AIMTs you want. Okay, maybe if you want 3 AIMTs, then we don't have any choice. We will be having on 3 remaining weekends, right? So just let us know how was your experience and how many AIMTs you want. Okay.
Yes, so Sai Sujit is saying, sir, please do AI marathon. We will definitely request Anjali, okay, if she can make arrange AI marathons, and I think she will be able to if she has time. So we will be definitely requesting Anjali, okay. So don't worry. If you know there is a meme, हम करते हैं प्रबंध, तो we will हाँ, arrange it. आप चिंता मत कीजिए, हम हाँ, करते हैं। yes, आप चिंता मत कीजिए, हम प्रबंध करते हैं. So one of the comment that I just before closing just like to mention, one of the comment that was I think from Tamil Selvan again. So he just said that Go classes test series is basically so much balanced that it doesn't demotivate by asking unnecessarily tricky questions, or unnecessarily not tricky, basically unnecessarily tough questions. Basically it doesn't make sense to ask all of the tough questions, and which are just unnecessarily doing integration, just or maybe putting a lot of formulas here and there. So it is not the aim of the test series. We have only single aim. One thing, that paper should be balanced enough that it should be gate worthy or gate relevant, okay. So paper should be gate worthy. This is the single aim. And the next aim, to be honest, is that we don't care that how our image is getting projected, okay. So honestly, in the sense that maybe people are saying it is tough or easy, only we care that, okay, once you see question here, we want you to revise, or we want to automatically, okay, automatically you will be revising all the concepts with these AIMTs help, right? एक्चुअली हाँ, सचिन, एक्चुअली जो इमेज वाली बात करी आपने, तो हर बार हर साल ऐसा ही होता है कि बेसिकली जब गेट के एग्जाम से पहले जब स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि जब हमारे मॉक टेस्ट या आईएमटी देते हैं, तो उस टाइम अगर उनके कम मार्क्स आ जाते हैं तो वो सीधा बोल देते हैं कि नहीं नहीं इनकी तो हार्ड है। तो वो गेट के एग्जाम से पहले ऐसा होता है, और जिस दिन गेट एग्जाम होती है उसके अगले दिन हाँ, हमारी इमेज फिर से सुधर जाती है। हाँ, ठीक है, कमेंट करते क्योंकि हैं कि यहीं से क्वेश्चन आए थे। हाँ, हाँ, क्योंकि गेट की एग्जाम जैसी होती है उसके अगले दिन क्या, उसी दिन इमेज फिर से एकदम बिल्कुल टॉप पे चली जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को उस दिन पता चलता है, हाँ, स्टूडेंट्स को उस दिन पता चलता है कि रियल में जो गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट जो एएमटी थे उनकी वजह से कितनी हेल्प हुई, कितने सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व हो गए, कितने सारे क्वेश्चंस के लिए मैं रेडी था, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं रेडी था, या बेसिकली गेट एग्जाम के लिए मैं रेडी हुआ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे सचिन ने बोला कि कभी कभी ऐसा होता है, और ओब्वियसली इतने सारे स्टूडेंट अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे गेट डीए के जो मॉक टेस्ट है उनको अगर 700 800 अगर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को पेपर हार्ड लगेगा, और फिर वो बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर फैलाएंगे कि नहीं नहीं इनकी तो टेस्ट सीरीज बहुत हार्ड है, वो इमेज खराब करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अ, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन गेट डीए का एग्जाम होगा ना, 15 फरवरी को हमारी इमेज फिर से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हर साल होता है। एंड एनीवे, जो सचिन ने बोला कि हमें इमेज की इतनी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अगर इमेज की टेंशन होती तो हम भी इजी पेपर बनाते, हम भी गेट पीवाई क्योंकि रेप्लिका डाल देते, आप भी खुश होते, आप में से कुछ लोग खुश होते, याद रखना। आप में से वो स्टूडेंट जो टॉप करने वाले हैं, जिनका एक टॉपर माइंडसेट है ना, वो खुश नहीं होते। उनका आता है कि सर ये क्वेश्चन तो मैंने गेट पीवाई क्योंकि अंदर सोल्व कर रखा है, ठीक है, तो इसको दोबारा मतलब एआईएमटी के अंदर डालने का क्या मतलब है। लेकिन बस वो बता रहा हूँ कि अगर हमें ऐसा होता कि यार हमें तो मतलब क्राउड को इम्प्रेस करना है, तो हम भी इजी क्वेश्चन डालते, इजी पेपर बनाते, ठीक है, ताकि इमेज बनी रहे। ठीक है, तो ऐसा हमारा पर्पज नहीं है, हमारा पर्पज है, क्योंकि आपका पर्पज है टॉप करना। आप गेट एग्जाम को टाइम पास के लिए तो दे नहीं रहे, आपको टॉप करना है, और अगर आपको टॉप करना है तो आपको इसी तरह के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। ओके, इसी तरह के मॉक टेस्ट एआईएमटी टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए। ओके, तो इसलिए वो हमारा पर्पज है कि आप कुछ सीखो, और आप गेट एग्जाम के बाद में हमें बोलो सर आपकी वजह से इतनी हेल्प हुई। ओके सचिन, सॉरी टू इंटरप्ट, आप जो कंटिन्यू कर रहे थे। नहीं, एक्चुअली हाँ, मतलब मेरा हो गया था। मैं वही बोलना चाह रहा था कि हम बेसिकली मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो क्वेश्चन आपको फाइनली हेल्प करें। दिस इज द ओनली एम, बिकॉज सी AIMT में इफ़ यू आर गेटिंग लेट सपोज 30 मार्क्स 40 मार्क्स वट एवर, ओके, मतलब 50 60 जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, वट एवर मार्क्स यू आर गेटिंग, अल्टीमेटली नो वन इज गोइंग टू आस्क यू ओके हाउ मेनी मार्क्स यू हैव गॉट इन AIMT गो क्लासेज AIMT। एवरी वन इज गोइंग टू आस्क यू हाउ मेनी मार्क्स you have got in GATE 2025, right? So if you are able to solve more questions in GATE 2025 because of AIMTs, then those AIMTs are completely worth it, and we are working day and night just to make sure this only. See,
the variety of question that you will feel, okay, it's not too complicated. For example, insertion sort question that one of student mentioned, right? And again, just I would again like to mention the same question, that master's theorem question. वो क्वेश्चन सच में मतलब देखने में ऐसा लग रहा है, हाँ, टी एन इक्वल टू टू टी एन बाई टू प्लस ऑर्डर ऑफ एन, इसमें क्या है, लाइक वी कैन जस्ट डू इट इमीडिएटली, राइट? दैट वाज एमएसक्यू क्वेश्चन. एंड आई एम श्योर if you have not paid attention to o big O plus big O n, because in master's theorem generally जो प्लस में जो टर्म होती है दैट इज अ थीटा, ओके, मतलब जो एफ एन होता है डायरेक्टली, है ना, लाइक प्लस एन होता है, प्लस एन स्क्वायर होता है. इफ वी आर पुटिंग बिग O ऑफ n, देन इट मींस इट कुड बी लेस देन इक्वल टू n. तो वहां पे दैट वाज द ट्रिक इन दैट क्वेश्चन. तो एंड इट वाज एमएसक्यू. तो दैट क्वेश्चन वाज रियली, आई मीन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन. ऑल्दो मतलब देयर वर मेनी गुड क्वेश्चंस, बट वो क्वेश्चन मुझे, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि यार ये क्वेश्चन डालते हैं. तो वो क्वेश्चन मुझे तो बहुत पसंद आया. एंड बिकॉज आई नो कि स्टूडेंट्स इसमें दे विल जस्ट मिस द स्मॉल थिंग. So that, mean median question was also nice. Okay, let me just reveal one thing. Mean median question is similar kind of question. This question was from discrete random variable, जो इस बार था mean median का. But next mean median question will be there in AIMT 4, and that will be related to continuous random variable. Just a spoiler. पेपर लीक मत करो भाई. Just I'm giving a spoiler. तो वो सही क्वेश्चन है. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं यार, जब इस सेशन को देखेंगे उनको अनफेयर डिसएडवांटेज मत दो. नहीं, no, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन रिवील नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टेलिंग द टॉपिक इन जनरल. ठीक है. Okay, so I think everyone has liked AIMTs. So if you have any suggestion also, then we are really here to improve it. जो भी आपका suggestion है कि सर, for example, there are many suggestions कि hypothesis testing के क्वेश्चन ज़्यादा डालो, या फिर गिब्स सैम्पलिंग के डालो, रिजेक्शन सैम्पलिंग के डालो. जो भी आपका suggestion है, just let us know in comments. How many AIMT you want and what have been your feedback. Okay, anything that is in your mind, just let us know in comments. और अगर आप चाहते हो कि किसी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले, तो ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दो ताकि सबको पता चले. ठीक है. लेट Right. सारे गेट डीए के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दो प्लीज. और अगर गेट डीए के AIMT 4 और 5 के अंदर अगर 1000 स्टूडेंट्स अगर अपीयर होते हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपको गेट एग्जाम से पहले सीधा, अभी भी अगर 2 या 3 AIMT आने बाकी है, राइट, 2 या 3 AIMT अगर आएंगे और उनमें अगर 1000 स्टूडेंट्स या उससे ज्यादा स्टूडेंट अगर अपीयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप रियली, मैं लिख के दे रहा हूं कि आप बेसिकली जो गेट 2025 का जो असली कंपटीशन है ना, वो असली कंपटीशन सीधा आप यहीं पे एक्सरसाइज कर रहे होगे. उसकी जो रिहर्सल, आपकी प्रैक्टिस मैच चल रहे होंगे, वो भी उसी कंपटीशन के साथ जो गेट 2025 के अंदर है. क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट्स बहुत कम होते हैं, डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स बहुत कम होते हैं. जितने भी 50,000 के आसपास स्टूडेंट गेट डीए के अंदर अपीयर होते हैं, उनमें से मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट सारे सीरियस एस्पिरेंट्स जो हैं वो गेट डीए गो क्लासेस की जो AIMTs हैं उनको ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रहे होंगे. और AIMT 4 और 5 को भी अगर वो अटेम्प्ट करते हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको आपका सीधा जो एक बेसिकली आपकी जो रिहर्सल हो रही है, आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है, वो सीधी उसी कंपटीशन के साथ हो रही है जो गेट 2025 के अंदर कंपटीशन रहने वाला है. तो एग्जाम से पहले 3 मॉक टेस्ट आपके पास में है, तीन AIMT आपके पास में है उस लेवल की कंपटीशन की प्रैक्टिस करने के लिए. ओके, सो प्लीज शेयर विद एवरीवन. प्लीज मेक श्योर दैट 1000 students or more than 1000 students appear in AIMT 4, 5, 6 of Go classes. Okay, thank you everyone, and let us know in the comments what are the dates, टाइमिंग तो फिक्स ही है, 9:30, क्योंकि आपकी गेट डीए का जो पेपर होगा वो भी 9:30 मॉर्निंग में होगा, तो इसलिए टाइमिंग तो फिक्स ही रहेगी. लेकिन डेट वगैरह के लिए आप हमें बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कौन सी मैराथन आपको चाहिए, कौन सी टॉपिक पे मैराथन आपको चाहिए. योर फीडबैक, योर सजेशंस, just let us know. Okay, thank you everyone. Thank you everyone.